Hello and welcome. We are starting a new chapter today of Science 1. So this is the first learning session of chapter number 2 of Science 1, which is called Periodic Classification of Elements. Okay. So we are going to learn Dobereiner's triads after we go through the introduction for this chapter. Okay. So to start with the introduction, we're just going to discuss some can you recall type of questions. Okay. All these are very basic questions. All these concepts you all have learned in right from your 4th grade, 5th grade, 6th grade, 7th grade up till 10th grade. Okay. So just try to write the answers for all of these 4 questions, and many of these questions don't have one correct answer. There could be many different answers, and all of them could be correct. There could be different ways to see the same concept. Okay, so it's okay if your answer does not match mine, but you all should have your own thinking, and you all should have these basic concepts clear. Okay, so I'm going to wait for 5 seconds, and I want you to pause the video and come up with your own answers for all of these 4 questions. Okay. Okay, I hope you all have paused the video and have written one line for each answer. Okay, now we're going to discuss all the questions and their answers one by one. So the first question was, what are the types of matter? Okay, so the types of matter, first is what I have written is pure substances. Okay, pure substances any elements हो सकते हैं, for example oxygen, nitrogen, fluorine, sulfur, etc. So those are your pure substances और उन elements के compounds. Okay, if two oxygen so oxygen, how does oxygen how is oxygen present in our atmosphere? It is never present as one atom. वो हमेशा O2 के form में होता है, right? O2 के form में. Why O2? Because oxygen by itself is not stable. So oxygen atom has to combine with another oxygen atom. It has to bond with another oxygen atom to be stable. सो ऑक्सीजन का हमेशा एलिमेंटल फॉर्म या एक एक एटम नहीं मिलेगा, उसका कंपाउंड मिलेगा. तो ऑक्सीजन का क्या कंपाउंड है? O2. ओके, 2 ऑक्सीजन साथ में. सो फिर भी वो प्योर है, राइट? व्हाई इज इट प्योर? बिकॉज सिर्फ ऑक्सीजन ही और कुछ नहीं है. ओके, सो वन इज प्योर सब्सटेंसेस एंड अदर इज मिक्सचर्स. मिक्सचर्स यानी मिक्स होगा प्योर सब्सटेंसेस का. फॉर एग्जांपल मीथेन. मीथेन गैस में कार्बन होता है एंड हाइड्रोजन होता है, राइट? सो इट्स अ मिक्सचर ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन. सो types of matter I've written pure substances and mixtures. As I said, there cannot be one correct answer. There are many different answers to this question which can also be correct. Okay, for example, अगर तुम लोग ने types of matter में if you write it can occur in physical in solid, liquid and gas, that could also be a valid answer. Okay, or you will say it occurs as metals and non-metals, that is also a valid answer. Okay, so there are many valid answers, all of them can be correct. So it's not necessary that you have this particular answer in your notebooks. Okay, but do copy this answer also in your notebook. Okay, other than whatever you have written as your answer. Okay, then what are types of elements? So मैटर 2 टाइप के, प्योर और मिक्सचर्स. सो प्योर में एलिमेंट्स आ जाएंगे. सो एलिमेंट्स के क्या टाइप्स है? एलिमेंट्स के देयर आर 3 टाइप्स. ओके, फर्स्ट इज मेटल्स, नेक्स्ट इज नॉन मेटल्स. सो मेटल्स नॉन मेटल्स समझ में आता है, राइट? फॉर एग्जांपल कॉपर इज अ मेटल, एल्यूमिनियम इज अ मेटल, आयरन इज अ मेटल. नॉन मेटल भी समझ में आता है जो मेटल नहीं है. फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन इज नॉट अ मेटल, नाइट्रोजन इज नॉट अ मेटल, एटसेट्रा. ओके, मेटल नॉन मेटल समझ में आता है. तीसरा चीज क्या? मेटलॉइड्स. व्हाट इज मेटलॉइड्स? So metalloids have some characteristics of metals and some characteristics of non-metals. थोड़ा कभी कभी metals की तरह behave करेगा, कभी कभी non-metals की तरह behave करेगा. So those are your metalloids. Okay. Next, what are the smallest particles of matter called? So I have written the smallest particle of matter is atom. Okay. So say for example, if you take sodium का एक इतना बड़ा टुकड़ा. ओके, सोडियम का इतना बड़ा टुकड़ा ले लिया एंड यू आर ट्राइंग टू कट इट नाउ. सो कीप कटिंग, कीप कटिंग, कीप कटिंग, कीप कटिंग, so on and so forth. Okay, until end में you will be left only with one atom. Okay, obviously you cannot cut by knife and get only one atom, but somehow you keep cutting for a long time. Okay, उसको तोड़ते जाते हो, you keep making smaller pieces. At the end you will be left with one atom of sodium, right? So I have written my smallest particle as that. But again we know that atom में the atom has a nucleus and electron. So if you wrote your answer as nucleus, that is also a valid answer. If you wrote your answer as electron, that is also a valid answer, because electron, nucleus, protons, neutrons, all of them are smaller than
atom. So technically smallest particle atom नहीं है. Even if you write protons and say for example neutrons, they are made up of even smaller particles which are known as quarks. Okay, QUARKS, quarks, which generally we study in 12th grade science. Okay, 12th grade science in physics class you will study that neutrons, protons, these are also made up of small particles which are known as quarks. So quarks could also be a correct answer if you written quarks. Okay, but I have settled at atom. Okay, for us, I think at 10th grade level, atom is the smallest particle, and if you have written electron or if you have written proton or neutron, that is also a valid answer. Okay, but do write this answer also as one of the answers in your notebook other than what you have written in your answers. Okay, we're going to move ahead. Fourth question baki hai. What is the difference between molecules of elements and compounds? Okay, molecule of element और molecule of compound में क्या फर्क होता है? So molecule of an element are made up of one or more atoms that are exactly alike. Okay, molecules of elements are made up of one or more atoms which are exactly alike. So इसका example क्या है? Carbon. The left side here is an example of element of molecule of element. So बहुत सारी जो कुछ black circles दिख रहे हैं, those are carbon atoms. Okay, carbon atoms do not actually look like this. ये बस एक representation है. और बीच में ये जो चीजें हैं, those are bonds between carbon atoms. They don't actually look like this, but ऐसे if you make such a model, it's easy to understand. That's why I've taken this picture. So all the black balls are carbon. Okay, so सारे atoms एक ही type के, which is carbon, right? That's why they say exactly alike. किसके केस में? Molecules of element. Carbon is an element, right? Whereas the molecules of compound are made up of atoms of different types. अभी compound का एक example क्या है? What is the compound of water? For example, water का compound है H2O, right? So H2O में again your right hand side, water does not look like this. Water के molecules ऐसे नहीं दिखते हैं. But again, this is just a representation so that it's easy for us to understand. So the red dots are oxygen and the blue dots are hydrogen. Okay, H2O, दो hydrogen. So if you see one, here is a hydrogen atom, here is a hydrogen atom, or that is attached to one oxygen atom. Okay, so molecules of compound में एक ही टाइप का एलिमेंट नहीं है, एक ही टाइप का एटम नहीं है, इसमें दो टाइप के एटम्स है, one is hydrogen, one is oxygen. So that's the basic difference between molecule of elements जिसमें एक ही टाइप का एटम होगा and molecule of compounds जिसमें एक से ज्यादा टाइप के एटम्स हो सकते हैं. Okay, so very easy example is hydrogen, एक से ज्यादा, easy example is water, एक से ज्यादा element है, right? Okay, with that let's move ahead. The name of the chapter is classification of elements. So before we actually start classification of elements, what you all have to know by heart is at least the first 20 elements. Okay, first 20 elements तुम लोग को by heart होने चाहिए. And if possible, if you're thinking of scoring say 85%, 90%, 95%, then I would highly recommend you by heart all the first 35 elements. Okay, and I know some students who also by heart the entire periodic table. Now what's periodic table we'll see anyway in the coming learning sessions, but for now let us focus on by hearting the first 20 elements. Okay, so here I have written the element symbol. Okay, so hydrogen, helium, lithium, beryllium, so on and so forth, and in the brackets I have written atomic number. Now if you remember atomic number, it is the number of electrons or the number of protons in a atom. Okay, number of electrons will be equal to number of protons. Protons positively charged होते हैं, electrons negatively charged होते हैं, and atom overall is neutral. उसको ना ही positive charge होता है, ना ही negative charge होता है, right? So for the atom to be neutral, number of electron और number of proton हमेशा equal होना चाहिए. Okay, so जितना number of electrons होगा उतना ही number of protons होगा. So hydrogen में there will be 1 electron, helium में 2 electrons, सिलिकॉन में 14 इलेक्ट्रॉन्स, आर्गन में 18 इलेक्ट्रॉन्स, सो ऑन एंड सो फोर्थ. सो ब्रैकेट में मैंने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लिखे हैं जिसको एटॉमिक नंबर भी बोलते हैं. ओके, एंड हाउ टू रिमेंबर. सो इन 9th grade itself we had learned this लंबा सा लाइन जिससे हम लोग याद रखते हैं, राइट? सो इट इज हाय हेलो लिसन टू बीबीसी न्यूज ऑन फ्राइडे नाइट, ना मांगो अल्लाह से पेप्सी सोडा कोला ऐश्वर्या राय कटरीना कैफ. ओके, दिस इज हाउ वी हैव रिमेंबर्ड द फर्स्ट 20 elements. So I know most of you all have already by hearted this line without
without seeing, you all should be able to say this very fast. Okay. Hi, hello, listen to BBC News on Friday night. Na mango wala se Pepsi soda cola Aishwarya Katrina Kaif. Okay. You should be able to say this line very fast, and जितना फास्ट तुम लोग बोल पाओगे उतना ही तुम लोग को साउंड्स याद रह जाएगा अपने दिमाग में. ओके. So that's the first step, and I know most of you all have already conquered the first step. Okay, तुम लोग को already by heart है, but many students where they fail is हाई के लिए कौन सा एलिमेंट है? हाइड्रोजन. तो उसका एलिमेंट याद नहीं होता है. हेलो के लिए कौन सा एलिमेंट है? हीलियम. पेप्सी के लिए कौन सा एलिमेंट है? फॉस्फोरस. सोडा के लिए कौन सा एलिमेंट है? सिलिकॉन, सॉरी सल्फर. सी नाउ even when it's in front of me, the entire table is front of me, I made that silly mistake. So just by hearting that entire line is not enough. उसके related कौन सा एलिमेंट है? that should also be by hearted. Okay. और एलिमेंट्स के सिंबल्स भी याद होने चाहिए. फॉर एग्जांपल वन कंफ्यूजिंग एलिमेंट, टू कंफ्यूजिंग एलिमेंट्स आर Si which is silicon and S, only S which is sulfur. Okay, so Se which is Allah say, right? Say is silicon and उसका सिंबल है Si, whereas soda which is only S, एलिमेंट का सिंबल है only S, उसका एलिमेंट का नाम है सल्फर. So all this should be very clear to you. So make sure you are copying this, and if you have already by hearted this, try to copy it without seeing. तुम्हारे notes जब तुम बना रहे हो तभी without seeing copy करने की कोशिश करो. All the three columns, okay? Element symbol भी, how to remember, and element name, तीनों एक साथ लिखने की कोशिश करो. And in the brackets also write the atomic number. फिर atomic number याद करने की जरूरत नहीं है तुम लोग को. If I ask you how many electrons does magnesium have, then your answer should be 12. Okay, if you can write this in the exam or the answer sheet, ये काफी easily by heart हो जाएगा. Okay, so I'm going to move ahead. Classification of elements. That's our chapter's name. Okay, classification of element. We have learned in the previous standards that all atoms of an element are of only one type. For example, if I say take a piece of copper, so copper के अंदर जितने भी atoms होंगे वो सारे copper के atoms होंगे, सारे same atoms होंगे. Okay, यानी what they're trying to say is all atoms of an element for example copper is an element, right? तो उसके अंदर जो कोई भी atoms होंगे वो सारे एक ही type के होंगे. Today 118 elements are known to the scientific world. आज हमें 118 elements पता है. Okay, however around year 1800, okay, 1800 यानी today we are living in 2020. So 1920 would be 100 years back, 1820 would be 200 years back. So 200 साल पहले, which was around 1800s, only 30 elements were known. तब इतने 118 elements नहीं पता थे. तभी 200 साल पहले सिर्फ 30 elements discover हुए थे. More number of elements were discovered in the course of time. More and more information about the properties of these elements was gathered. So as time passed, scientists started working on this and they found more and more elements and उनके क्या क्या properties है. Now we have lot of information about that. Okay. To ease the study of such a large number of elements, scientists started studying the pattern, if any, in the vast information about them. So इतने ज़्यादा elements हो गए कि उनको अच्छे से स्टडी करने के लिए, अच्छे से याद रखने के लिए और कनेक्शंस बनाने के लिए दे आर ट्राइंग टू फाइंड सम पैटर्न. अगर एक पैटर्न मिल गया तुम लोग को तो इट्स इजी टू स्टडी दैट, राइट? फॉर एग्जांपल आई गिव यू ऑल, इफ यू स्टार्ट राइटिंग नंबर्स 1 to 100, okay, so you will start writing, let me increase the size of my window. Okay, so imagine you start writing numbers 1 to 100, so you start writing 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. बट नाउ यू नो 10 के बाद एक पैटर्न रिपीट होता है, वापस सेकंड नंबर 1 हो जाएगा. सो 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, वापस अगेन यू नो द पैटर्न इज गोइंग टू रिपीट, सो यू राइट 21 अगेन 11 के बाजू में, वैसे 31 21 के बाजू में, वैसे 41 31 के बाजू में. सो यू सी अ पैटर्न हियर, राइट, कि हमेशा जो सेकंड नंबर होता है वो सेम होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. सो अगर 20s वाला तुम कॉलम लिख रहे हो तो फर्स्ट नंबर हमेशा 2 होगा एंड सेकंड नंबर हमेशा 1 से लेके 9 तक जाएगा. ओके, सिमिलरली अगर 70s लिख रहे हो फर्स्ट नंबर हमेशा 7 होगा, सेकंड नंबर हमेशा 1 2 3 4 5 6 so on and so forth. So तुम लोग एक पैटर्न मिल गया. once you get a pattern it's easy to study it and it's easy to remember and understanding के लिए भी easy हो जाता है, right? So the same logic applies here. So they have so many
एलिमेंट्स, इतने सारे एलिमेंट्स वो लोग ने डिस्कवर कर लिए, दे वांट टू सी सम पैटर्न। ओके, अगर एक पैटर्न मिल गया उस तरीके से उस पैटर्न में उसको अरेंज कर लेंगे सो दैट्स इजी टू स्टडी देम एंड इट्स इजी टू मेक कनेक्शंस। ओके, so you know that the in the initial classification of elements, elements were classified into groups of metals and non-metals. So पहले वो लोग ने कैसे क्लासिफाई किया था, metals and non-metals में. Then later on another class of elements called as metalloids were found. Okay, noticed यानी found. So पहले क्योंकि they were trying to find classification, उनको अलग अलग buckets में divide करना था उनको, so they divided into metals and non-metals. Okay, जो electricity conduct करते that is metals, जो electricity नहीं conduct करता that is non-metals. But then they found metalloids जिनके कुछ properties metals जैसे, कुछ properties non-metals जैसे, तो पूरा जो उनको पैटर्न उन्होंने देखा था वो पूरा फेल हो गया. Okay, numbers also you can do that, right? Numbers you can do odd numbers and even numbers. जो कुछ भी 2 से डिवाइड हो रहा है those all of them are even numbers. जो कुछ भी 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है those are your odd numbers. You can do the same thing with numbers, but numbers में ऐसा कोई नंबर है नहीं जो odd भी नहीं है, even भी नहीं है, कुछ और ही है, या फिर थोड़ा सा odd है या फिर थोड़ा सा even है. So elements के केस में थोड़ा complicated हो जाता है वो, numbers में इतना easy, numbers में it's much easier. Okay, as the knowledge about elements and their properties went on increasing, different scientists started trying out different methods of classification. So जैसी number of elements started increasing, अलग अलग scientists अलग अलग pattern ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, अलग अलग तरीके से arrange करने की कोशिश कर रहे हैं. Okay, जैसे कि for example in numbers also you can, another distinction you can make is I told you one, right? Odd numbers, even numbers. Then I told you 10 के ग्रुप बना दो. So 10 के ग्रुप बनाओगे तुम तो सेकंड नंबर हमेशा 1 से लेके 9 तक जाएगा, फर्स्ट नंबर हमेशा कॉमन रहेगा 2 डिजिट नंबर्स में. The other way is 1 digit numbers, 2 digit numbers, 3 digit numbers. Another way is prime numbers, non-prime numbers. Another way could be positive numbers, negative numbers and zero. Another way could be rational numbers and irrational numbers. So there are so many ways you can classify numbers, right? उसी तरह there are so many ways you can classify elements also. So different scientists were trying different ways to classify elements so that they can make more sense out of it. उसको और अच्छे से समझने के लिए अलग अलग तरीके से उसको classify करें based on different things. Okay, so that's how scientists started trying different methods for classification of elements. So first one we are learning is Dobereiner's triads. Okay, so in the year 1817, so almost 200 years back. Okay, actually not almost, more than 200 years ago to be exact, 203 साल पहले, a German scientist, his name is Dobereiner. Okay, so how do you spell it? D-O is do, B-E is be, R-E-I is re, N-E-R is ner. Dobereiner. Dobereiner. Okay, so German scientist Dobereiner in 1817 year suggested that properties of elements are related to their atomic masses. Okay, so what are atomic masses? We know atomic number. What is atomic number? उस एलिमेंट के एटम में कितने इलेक्ट्रॉन्स है या फिर उस एलिमेंट के एटम में कितने प्रोटॉन्स है, दैट इज योर एटॉमिक नंबर. बट यहाँ पे क्या बोला है? एटॉमिक मास. सो एटॉमिक मास इज द मास ऑफ एन एटम. अगर उस एटम को ले लिया तुम लोग ने, से फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन का एटम ले लो और उसका वजन कर दो, उसका जो कुछ भी वजन आएगा दैट इज एटॉमिक मास. और उसका यूनिट क्या होता है? यू. एटॉमिक यूनिट, उसका सिंबल होता है यू, दैट वी हैड स्टडीड इन डिटेल इन 9th grade. ओके, so copy this statement. Okay, atomic mass is the mass of the atom. बाकी पूरा कॉपी करने की जरूरत नहीं because it's taken from the textbook. I have written it, do not copy, but do copy the second point in your notebooks. Okay, so Dobereiner बोल रहा है कि properties maybe they are related to atomic masses, mass से related होंगे. So he made groups of 3 elements each having similar chemical properties and called them triads. How do you pronounce this? TRI means try. TRI means 3. Okay, try means 3. And how do you pronounce it? TRI is try, ADS is adds. Okay, triads. So Dobereiner made groups of 3 elements each having similar chemical properties. So Dobereiner के सामने इतने सारे elements थे, so उसने सबके elements के properties लिख दिए और जिनके भी same properties थे ऐसे 3 elements उठा के साथ में रख दिए. ओके, सो इफ आई सी, अच्छा इन तीनों के सेम प्रॉपर्टीज है, तीनों को उठा के एक जगह पे एक ग्रुप बना दो, आई विल कॉल देम एज अ ट्रायड.
और कुछ 3 एलिमेंट्स है उनके कुछ अलग प्रॉपर्टी सिमिलर लग रहे हैं, उनको उठा के साथ में लेके आ जाओ, दूसरा ग्रुप बना, उसको बोलो दूसरा ट्रायड। ओके, सो ही मेड ट्रायड्स, 3 एलिमेंट्स का ग्रुप जिनके प्रॉपर्टीज सिमिलर होंगे, ओके, एक जैसे होंगे। He arranged the 3 elements in a triad in an increasing order of atomic mass. So atomic, वो जो 3 elements उसको मिले जो सेम सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले थे, उनको असेंडिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में डाला, यानी कम से सबसे छोटा एटॉमिक, सबसे कम एटॉमिक मास वाला पहले लिखा, सबसे ज्यादा एटॉमिक मास वाला बाद में लिखा, और बीच में जो बच गया एलिमेंट उसको लिख दिया। ओके, एंड ही डिड वन स्मॉल कैलकुलेशन. What was the calculation? He showed that the atomic mass of the middle element was approximately equal to the mean of the atomic masses of the other 2 elements. It was a long sentence, but the meaning is very simple. वो जो 3 elements उसने ascending order में लगाए थे atomic mass के हिसाब से, पहले दो, सॉरी लास्ट के दो जो elements है उनके atomic mass का mean निकाल दिया, तो बीच के element का atomic mass आ गया। ओके, एंड exactly equal नहीं आया, but approximately equal आया, काफी पास में आ गया। ओके, I'm going to repeat that. 3 एलिमेंट्स ले लिए जिनका प्रॉपर्टीज काफी सिमिलर है, उनको एक ग्रुप में डाल दिया, उनको ट्रायड बोल दिया। फिर वो ट्रायड में से वो जो 3 एलिमेंट्स है उनको कैसे अरेंज किया, सबसे कम एटॉमिक मास, सबसे ज्यादा एटॉमिक मास, और जो बच गया एलिमेंट वो बीच में। फिर क्या किया, लास्ट के जो दो एलिमेंट्स है उनके एटॉमिक मास का मीन निकाल दिया, तो बीच का जो एलिमेंट है उसका एटॉमिक मास मिल गया। ओके, अप्रोक्सीमेटली उतना मिल गया। सो उसने कैलकुलेशन करके बताया, यानी अभी जब इतना अच्छे से सब कुछ फिट हो रहा है, नहीं, ही मस्ट बी राइट, isn't it? And that's how it seemed. So these are a few calculations. Okay, तो एक ट्रायड है LiNaK. So what is Li? Li is lithium, Na is sodium, K is potassium. So lithium, sodium, potassium, ये एक ट्रायड है। So first element, so उस फर्स्ट स्टेप क्या है, सबको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो। So सबसे कम एटॉमिक मास किसका है, लिथियम का 6.9, सबसे ज्यादा किसका है, सोडियम का 23, और बीच में जो है 20, गिव मी अ मिनट, सॉरी, सो सबसे ज्यादा एटॉमिक मास किसका है, पोटेशियम का, नॉट सोडियम का। ओके, सो पोटेशियम का 39.1 है एटॉमिक मास, तो बचा कौन सा, सोडियम, सोडियम का है एटॉमिक मास 23। ओके, सो देन व्हाट यू डू इज, ये जो फर्स्ट एलिमेंट है और ये जो लास्ट एलिमेंट है, दोनों के एटॉमिक मास का मीन निकालो। मीन कैसे निकालते हैं, दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2। सो यहाँ से 6.9 ले लिया, यहाँ से 31.1 ले लिया, दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2 किया, क्या आया आंसर, 23.0। और सोडियम का एक्चुअल मास क्या है, 23.0, तो एग्जैक्टली मैच हो गया। ओके, ये जो कैलकुलेशन करके आया एग्जैक्टली मैच हो गया। दैट्स व्हाई दिस इज वन ऑफ द ट्रायड्स। ओके, डोबेरेनर ट्रायड, लिथियम, सोडियम, potassium. Similarly, you can do for these 2 triads also. You can check. So second triad is calcium, strontium, Sr is strontium, Ba is barium. Okay, Cl is chlorine, Br is bromine, and I is iodine. So in ये second triad है, ये third triad है। Okay, same thing applies. एटॉमिक मास को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दो, फर्स्ट एलिमेंट और लास्ट एलिमेंट का एटॉमिक मास का मीन निकालो, तो वो जो मिडिल एलिमेंट है उसका एटॉमिक मास आ जाता है। सो मिडिल एलिमेंट यहाँ पे जो थर्ड ट्रायड है उसमें है ब्रोमीन। ओके, ब्रोमीन का एक्चुअल एटॉमिक मास क्या है, 79.9, और कैलकुलेटर कितना आ रहा है, 81.2। इट्स नॉट एग्जैक्टली सेम नहीं आ रहा है, बट काफी पास में आ रहा है, 81.2 और 79.9, दे आर वेरी नियर बाय। ओके, सो दैट इज ऑल्सो अ ट्रायड। So make sure try to by heart these 3 triads. Okay, it could be asked in a question. For example, one question they could ask is calcium, strontium, barium. Is this a Dobereiner's triad? So if you've by hearted it, you don't have to make all these calculations. वरना तुम लोग को उसके atomic masses को add करके mean निकालना पड़ेगा, and then you will be able to see whether it's Dobereiner's triad or not. Okay. सो केस क्लोज्ड, राइट, चैप्टर ये पे खत्म हो जाना चाहिए था, क्योंकि हमें एक अच्छा वे मिल गया क्लासिफाई करने का डोबेरेनर्स ट्रायड को। तो आगे का चैप्टर क्यों बनाया वो लोग ने, द सिंपल आंसर इज हियर आई हैव रिटन इन अ स्टेटमेंट, ऑल नोन एलिमेंट्स कुड नॉट बी क्लासिफाइड इनटू डोबेरेनर्स ट्रायड्स। तब तक जितने भी एलिमेंट्स ढूंढने थे सारे के सारे डोबेरेनर्स ट्रायड्स में अरेंज नहीं हो रहे थे। ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स थे जो ऐसे 3-3 के पेयर्स में नहीं अच्छे से फिट हो रहे थे। So that was the problem with Dobereiner's triads. Okay, so hence we'll now in the next learning session probably we'll see how other people try to arrange elements in different ways. This was one way. So before we actually close out this learning session, there is a can you tell
type of question on page number 16. Okay, so it says identify Dobereiner triads from the following groups of elements having similar chemical properties. तो इनके already chemical properties same है, magnesium, calcium, strontium. इनके properties काफी similar है. बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, इनके भी प्रॉपर्टीज काफी सिमिलर है. तो हमें चेक करना है कि डोबेरेनर ट्रायड्स है कि नहीं. डोबेरेनर ट्रायड्स के लिए क्या करना पड़ता है? वी फर्स्ट डू व्हाट द फर्स्ट स्टेप वी डू इज उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में अरेंज करते हैं. सबसे कम एटॉमिक मास वाला लेफ्ट में, सबसे ज्यादा एटॉमिक मास वाला राइट में, और जो बच गया उसको बीच में लिख देते हैं. देन वी टेक द मीन, राइट. तो जो सबसे छोटा होगा, ये भी यहाँ पे ऑलरेडी अरेंज करके रखा है, राइट. सो इसको 24.3 को 87.6 में ऐड करो, डिवाइड बाय 2 करो एंड सी इफ इट इज कमिंग आउट अप्रोक्सीमेटली, यानी 39 से लेके 41 के रेंज में आ गया तो चलेगा. ओके, आ रहा है कि नहीं है चेक करना है. अगर आ रहा है देन इट्स अ Dobereiner triads, अगर नहीं आ रहा है देन इट्स नॉट अ Dobereiner triads. So make the calculations for all three of them. When I see your notes, I should be able to see the calculations for all three of these Dobereiner triads and check इसमें से कौन से है Dobereiner triads और कौन से नहीं है. Okay, so that's it for this learning session. I hope you all had fun. I hope you all learned something new, and I'll see you all, or sorry, you all see. I hope you all will see me in the next video. Okay, that's it for this learning session. See you all in the next. Peace.